Okay, good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. ओके सो ठीक है, तो हमें बात करनी है आज ट्रायंगल्स ऑफ द नेक्स्ट, है ना? ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द skull, the bones of the skull, and also a bit of some of the arterial supply of the scalp, and we talked about the scalp as well. ठीक है. Okay, so now we are supposed to talk about the triangles of the neck. Okay, first of all थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, है ना? But now we are supposed to discuss it in detail, the anterior triangle and the posterior triangle. ठीक है, तो till I guess till here we discussed the okay, तो इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं. आई होप स्क्रीन सबको विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑडियो में, वीडियो में कुछ? Yes, sir. ओके, ठीक है. ओके, तो स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल okay, first of all, if we have a look at each side of the neck, so first of all, of course, we have got two sides now, the left side and the right side, and if we are having a look at each side of the neck, we can say that it is quadrilateral in shape, not exactly quadrilateral, but at least more or less you can say it is quadrilateral. Quadrilateral अगर हम बोल रहे हैं तो there has to be four sides कौन कौन से होंगे? First of all, the anterior border of the trapezius, inferiorly the upper border of the clavicle, anteriorly the imaginary midline, है ना, midline of the neck, and superiorly it we can say it is the inferior border of the mandible, along with that some part of the line between the mastoid process and the occipital region. ठीक है, तो here we can see it is limited above by the lower border of the mandible and an imaginary line drawn from the angle of the mandible to the mastoid. Okay, to the mastoid process. So here we can see this line, we can say, so as a combination of both the imaginary line along with that the inferior border of the mandible, we can say that as a whole makes the upper border of this particular quadrilateral. ठीक है, anteriorly the line, the midline of the neck, inferiorly the upper part of the clavicle, and posteriorly the anterior border of the trapezius. So what we are seeing here, it is making a quadrilateral. Of course, we have got two such quadrilaterals. Now we have got one on the left and one on the right side. And what we see here, of course, if a quadrilateral is divided diagonally, it makes two different triangles. है ना? So we have got this anterior triangle and another one that is the posterior triangle, and this is being divided by which muscle? कोई बताएगा? By Sternocleidomastoid. by the SCM, and that is the muscle that is named according to its attachment. ये मैंने लास्ट क्लास में भी आई थिंक बोला था. ठीक है, तो ओके, तो इट इज़ द SCM. ठीक है, द SCM is the muscle that divides this particular quadrilateral into the anterior half and the posterior half, or we can say, and into two different triangles. थोड़ा पहले ज्वाइन कर लिया करो सब, फिर बीच में ना डिस्टर्बेंस होती है. चलो ठीक है, तो ओके, तो नाउ वी हैव गॉट द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ट्रायंगल. अब एंटीरियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द एंटीरियर ट्रायंगल. ओके, तो वी विल सी कि which are the structures making the borders of the anterior triangle. Apart from that, we will have a look at the sub triangles of the anterior triangle. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, we can have a look at this particular triangle. एक इस तरह का कुछ ट्रायंगल हमें देखने को मिल रहा है ना, ऑफ कोर्स बाउंडेड बाय सम मसल हेयर एंड सम मसल on this particular side of the triangle. ये एक ट्रायंगल बन रहा है. Likewise here we can see there can be another triangle that can be formed. यहाँ पे हम एक और ट्रायंगल देख सकते हैं. We will have a look at these triangles in detail. इसके अलावा देखो यहाँ पे भी हमें एक देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है हमें. ठीक है, तो we can see that there are at least we can figure out 4 sub triangles in the anterior triangle of the neck. ठीक है, likewise in the posterior triangle also we can see कि this particular muscle, this is called as the inferior belly of omohyoid. We will have a look at these muscles. तो we will see कि ये पूरी omohyoid muscle होती है. This is the superior belly of omohyoid, this is the inferior belly of omohyoid. ठीक है, we can say that the inferior belly of omohyoid is it divides the posterior triangle into a superior one and an inferior one. Likewise, हाँ, ये वाली एक मसल है, दिस मसल इज कॉल्ड एज द डाइगैस्ट्रिक. ये वाली एक मसल है, दिस इज अ कंटिन्यूस मसल फ्रॉम हेयर अप टू यू कैन से दिस पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, यहाँ पे भी इट इज विजिबल अ बिट. तो वी कैन से दैट दिस होल मसल इज द डाइगैस्ट्रिक. दिस इज कॉल्ड एज द सुपीरियर belly of digastric, or you can say the anterior belly of digastric. This is called as the posterior belly of digastric. ठीक है, this is the digastric muscle. दो मसल्स हमें समझ आ गई है. दिस इज द digastric, this is the omohyoid. ठीक है, and if I ask you like we know that this is the hyoid bone ना,
तो इज द डाइगैस्ट्रिक पार्ट ऑफ द सुप्राहाइड मसल और एन इंफ्राहाइड मसल? आप किसमें डालोगे सुप्रा? Suprahead. ऑफ कोर्स विल Forehead. हाँ है ना, तो एन ओमोहाइड को अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द इन्फीरियर द infrahyod muscles ना, because it is present below the hyoid. So and we can appreciate that the small muscles, if you talk about the suprahyoid muscles, they are a bit smaller than the infrahyoid muscles. You will see infrahyoid muscles are much longer in length as compared to the suprahyoid muscles. ठीक है, चलो अब इन muscles के बारे में पहले पहले let's discuss about the anterior triangle, then we will talk about these muscles. ठीक है, okay, so this is the anterior triangle, of course, and we can say medially by the it is bounded by the midline of the neck, superiorly by the inferior border of the mandible, and posteriorly, or you can say laterally, by the anterior border of the sternocleidomastoid. This we know है ना. Here also we can appreciate, देखो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, this is the hyoid bone. Here we can see the same muscle, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कंटिन्यूस है. इस मसल का मैंने अभी नाम बताया था, क्या कोई बताएगा इस पर्टिकुलर मसल का? Digastric. डाइगैस्ट्रिक ना, हाँ सेम मसल है, ये सेम मसल है. दिस इज द डाइगैस्ट्रिक. ठीक है, हियर वी कैन अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर मसल, दैट इज द डाइगैस्ट्रिक. दिस इज द एंटीरियर belly ऑफ डाइगैस्ट्रिक, दिस इज द पोस्टीरियर belly ऑफ डाइगैस्ट्रिक. ठीक है, लाइकवाइज मैंने अभी एक साइड पहले एक और मसल का नाम बताया था, विच वॉज डिवाइडिंग द पोस्टीरियर ट्राइंगल इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, दैट वाज Omohyoid. ओमोहायड है ना. एंड वी कैन सी है ना दिस पर्टिकुलर मसल, यहाँ पे वी कैन सी मे बी आई थिंक दिस वन मसल, ये मसल इट इज कंटिन्यूस हेयर. दिस इज द सुपीरियर belly ऑफ ओमोहायड, एंड हेयर वी कैन सी दिस इज द inferior belly ऑफ ओमोहायड. ठीक है, इन द inferior belly ऑफ ओमोहायड इट डिवाइड्स द posterior triangle into टू सब ट्राइंगल्स. ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें समझ आ गया. लाइकवाइज है वी कैन सी, देखो यहाँ पे जस्ट यू कैन से below the this particular muscle, the digastric के below we can see ये वाला मसल, सबको सब देख पा रहे हैं, ये वाला मसल, ये वाला. कैन एवरीवन अप्रिशिएट दिस Yes, sir. पर्टिकुलर मसल? ठीक है, दिस इज द माइलोहायोइड. ठीक है, of course this is present deeper to the digastric. If we remove the digastric, we can easily appreciate this particular muscle, that is the mylohyoid, and we can say that mylohyoid is participates and makes the floor of this particular region. Okay, we will talk about these triangles, but we can say that the mylohyoid is mainly responsible to make the floor of these sub triangles. Okay, so mylohyoid is present, it participates as a floor, and it is present deeper to the digastric. Okay, so till now we know about the digastric, till now we know about the omohyoid, the superior and the inferior belly, and we know about the mylohyoid muscle as well. ठीक है, तीन मसल तो हमारी क्लियर हो गई है यहाँ तक. Okay, so okay, ठीक है, again if we have a look, so let's now have a look at the muscles precisely, the suprahyoid and the infrahyoid. So first of all, talking about, here we can see कि if we have a look at the suprahyoid muscles, we can see कि these are much smaller muscles, but if we have a look at the infrahyoid, these are much more in length, ना, much longer than the suprahyoid muscles. ठीक है, okay, so here we can see that this is जो brown में shade किया हुआ है, the brown shaded muscle, that is the mylohyoid, and we can see that it makes the floor of this region, and सबसे deeper present है, it is present deeper to this particular muscle, to the digastric. ठीक है, also we can appreciate the digastric, this whole green colored muscle, that is the digastric. This is the anterior belly of digastric, this is the posterior belly of digastric. ठीक है, till now we know about two muscles of the suprahyoid muscles. ठीक है, the digastric and the mylohyoid. ठीक है, apart from that we can say that this particular muscle, ठीक है, this muscle, the blue shaded one, that is the genuhyoid, again a suprahyoid muscle, and another one that is the stylohyoid. ठीक है, तो again has attachment on the hyoid. जिस मसल में भी नाम hyoid आ रहा है, of course they are supposed to have their attachment with the hyoid bone ना. So it means that we can say that the mylohyoid is having attachment with the hyoid bone, the genuhyoid having attachment with the hyoid, and this particular, that is the stylohyoid having attachment with the hyoid bone. ठीक है, तो we have got this particular bone, muscle, that is the yellow colored one, that is the stylohyoid. ठीक है, stylohyoid, digastric, anterior and posterior belly, we have got the mylohyoid. ठीक है, and the genuhyoid. यहाँ तक clear है? At least we have an idea about Yes, these sir. muscles ना. ठीक है, we have got 4 set of suprahyoid muscles. Likewise we have got 4 set of infrahyoid muscles as well. So if we have a look at the infrahyoid muscles, so here we can see, so here we can say that of course they are most of these muscles are supposed to have their attachment with the hyoid, as well as you can say they are having their attachment with the
with the sternum. ठीक है, तो we can say that first of all this particular muscle, this we know, this is the omohyoid. ठीक है, omohyoid goes all the way from the anterior triangle up to the posterior triangle. ठीक है, this is the superior belly of omohyoid, this is the inferior belly of omohyoid. ठीक है, okay, now we can see that we have got the sternohyoid. The sternohyoid having attachment between the sternum and the hyoid bone. ठीक है, so we can say that this particular, this green colored one, this is having attachment with the hyoid as well as here we can, if the, with the sternum. ठीक है, so we can say that this is the sternohyoid. Sternohyoid है, likewise we have got thyrohyoid and sternothyroid as well. ठीक है, you can just remember कि एक particular muscle में starting में we have got thyroid, and in the another muscle we have got, in the end we have got the thyroid. We have got the thyroid, we will talk about the thyroid gland. Thyroid gland क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे, but we can see that in the infrahyoid muscles. Just to remember this thing, याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, that in one muscle we have got the thyroid in the initials, and in the another one we have got the thyroid in the end. ठीक है, तो sternothyroid, that means this particular from the sternum up to the thyroid, that is the sternothyroid, and from thyroid up to the hyoid we have got the thyrohyoid. ठीक है, तो sternothyroid and thyrohyoid, this particular जो ब्राउन में यहाँ पे दिखाया हुआ है. ठीक है, तो sternothyroid and thyrohyoid दो मसल्स हो गई. Omohyoid we know, and another one we have got the sternohyoid. Of course, sternum, between the sternum and the hyoid. ठीक है, नहीं, here between the sternum and the hyoid, this particular muscle, that is the sternohyoid, and again part of the infrahyoid muscles. I hope we are clear with these 8 muscles है ना, 4 and 4, suprahyoid and the infrahyoid. ठीक है, okay, we have got again, एक बार रिवाइज कर ले. We have got this particular muscle, that is the, कोई बताएगा इस वाले का नाम, that is geniohyoid ना, this is the geniohyoid. ये फ्लोर वाली जो है that is mylohyoid है ना. Mylohyoid. Yeah, this one Digastric. digastric, and this one last stylo. Mylohyoid. हाँ, stylohyoid. ठीक है, ओके, एंड एक बार यहाँ पे इंफ्राहाइड मसल्स देख लेते हैं. तो इंफ्राहाइड में फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, ये जो पोस्टीरियर बेली तक जा रही है, Omohyoid. this is the omohyoid, the superior belly and the inferior belly. Of course, apart from that we have got this muscle, that is sternothyroid. यहाँ से यहाँ तक sternothyroid है ना, and then continuation of this we can say thyrohyoid है ना. This is the thyrohyoid यहाँ पे, this is the sternothyroid. ठीक है, and और कौन सा बचा, sternohyoid ना, the sternohyoid, this one we have got the sternohyoid, the sternothyroid, thyrohyoid, and the omohyoid, the superior belly and the inferior belly. ठीक है, I hope we are clear with these 4 muscles, 4 and 4 muscles. Yes. ठीक है, okay, now we are supposed to talk about these muscles only when we will be talking about the borders of these triangles. ठीक है, तो okay, so first of all let's have a look at the content of the anterior triangle as a whole. Here we can have a look at all the muscles which are present in the anterior triangle. Likewise we will have a look at the content which are present, or the content which are present in the posterior triangle as well. तो सबसे पहले अगर anterior triangle में अगर हम बात कर रहे हैं, simply we need to remember, I think this needs to be memorized. You can just note it down somewhere, या फिर अगर आप के पास में भी अगर प्रिंट आउट है इसका तो आप you can just note it down, just underline it, या जैसे भी आप करना चाह रहे हो. But just remember, we have got some set of cranial nerves which we have to talk about if we are talking about the content of the anterior triangle. ठीक है, so we have got the facial nerve, that is the cranial nerve 7, the 9, that is the glossopharyngeal, vagus, accessory, and the hypoglossal. ठीक है, we have got these how many, 5, we have got these 5 है ना, 5 set of cranial nerves. Apart from that we have got, we know this thing that if we talk about the artery, तो हमारी artery में we have got the common carotid artery which bifurcates into the anterior, into the internal and which one, external carotid artery na, into the internal carotid artery and the external carotid artery. We know we have got the common carotid artery which bifurcates in the anterior triangle and bifurcates into the external carotid artery and the internal carotid artery. Can anyone tell me कि again ये मैं बार बार बोल चुका हूँ लेकिन where the internal carotid artery is supplying? The circle of Willis. And the external carotid artery? Scalp. The scalp है ना, and there is a branch of the internal carotid artery that supplies ophthalmic artery that supplies the scalp. Okay, ठीक है, and
In the end, we will talk about the questions of the test as well. किस किसने टेस्ट दिया था? Just tell me, मतलब एक बार किस किसने टेस्ट अटेम्प्ट किया था जो मैंने कल सेंड किया था? Yes, sir, I did. Okay. Yes, sir. I did. Okay, सौरभ आपने दिया था? ठीक है. Yes, sir. Okay, how was it? How was it? Except few questions, I know कुछ questions में थोड़ा बहुत आंसर्स में I think कुछ गड़बड़ थी. उसके अलावा questions कैसे थे? I think it was pretty simple. कि Yes, sir, it was great. Yes, sir. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, ठीक है. आगे आगे जो टेस्ट होंगे उनमें थोड़ा बहुत हम थोड़ा क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा विल ट्राई टू मेक इट ट्रिकी, बट आई नो कि आई डोंट नो, दिस इज सम ग्लिच विद द गूगल फॉर्म, आई डोंट नो, बट मैंने आंसर सबके ठीक मार्क किए थे. बट आई नो आप शायद यही बताना चाह रहे हो कि कुछ कुछ आंसर्स आपने मार्क करे एंड आंसर की में कुछ और, मतलब उसमें कुछ और था, आंसर कुछ और मार्क था. आई डोंट नो कि मैंने मैंने सही आंसर मार्क किया था उसमें. आई डोंट नो वो क्या ग्लिच हो रहा है, किसी के लिए कोई आंसर गलत हो रहा है, किसी के लिए कोई दूसरा गलत हो रहा है. आई डोंट नो, मैं कोई आई नीड टू गो थ्रू दैट फॉर्म अगेन, बट आई थिंक एवरीवन गॉट एन आइडिया कि मतलब क्वेश्चन, आई थिंक टेस्ट सिंपल था. तो कोई किसी का कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट हो? अगर अगर कोई डाउट हो तो जस्ट कीप इन माइंड, हम इस क्लास के एंड में एक बार डिस्कस कर लेंगे वो, ठीक है. ओके, सो ठीक है. तो हमने हमने बात कर ली अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. इट बाइफरकेट्स इनसाइड द एंटीरियर ट्रायंगल एंड प्रिसाइजली इफ वी टॉक अबाउट द सब ट्रायंगल जिसके अंदर इनसाइड विच द कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट्स, दैट इज द कैरोटिड ट्रायंगल. ठीक है, नाम यहाँ पे दिया हुआ है. इफ यू टॉक अबाउट द सब ट्रायंगल्स ऑफ द एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, we will see we have got a sub triangle that is called as carotid triangle. ठीक है, and inside the carotid triangle we can see the common carotid artery, it bifurcates. ठीक है, or we can say as a whole in the anterior triangle the common carotid artery bifurcates. Along with that, we first of all we have talked about the common carotid artery. Apart from that, we can see the internal jugular vein. So internal jugular vein, we can say that it is one of the major veins which is responsible for drainage of the blood from the head and neck region. ठीक है, from the head and neck region. Of course, vein is supposed to drain the blood, na. So for from the head and neck region, that is the internal jugular vein, and apart from that, these 5 cranial nerves. Okay, just an artery, a vein, and 5 cranial nerves. Just remember the name of these structures, these things, which are content or which are the part of the anterior triangle of the neck. I hope till now we are clear. We are done just with the content. हमने बात कर ली तो सुपर है ना, इंफ्रा हेड मसल्स. यहाँ पे आई होप एवरीवन गॉट एन आइडिया कौन सी मसल कहाँ पे प्रेजेंट है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज मसल्स ओनली व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सब ट्रायंगल्स एंड एज अ होल वी टॉक्ड अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द एंटीरियर ट्रायंगल. ठीक है, आई होप टिल नाउ वी आर क्लियर. ठीक है, Yes. ओके. सो नाउ okay, so now talking about the subdivisions, we can see first of all, इसको मैं image के साथ में दिखाता हूँ. We have got the submental triangle, the submandibular triangle, the carotid triangle. Carotid triangle I think हमें याद हो गया है because we know the common carotid artery bifurcates, and we have got another one that is called as the muscular triangle. So first of all, just have a look at these sub triangles. First of all, talking about the submental triangle, here we can see कि देखो as a whole we can appreciate that this whole is the anterior triangle, and inside this particular we can see this small muscle, this small triangle, this small sub triangle which is part of the anterior triangle, which is it is called as the submental triangle. Just you can say just below the mandible, or you can say just below the chin, that is called as the submental triangle. Likewise, we have got another triangle here that we can call it as the submandibular triangle, below the mandible है ना, mandible के नीचे, that is called as the submandibular triangle, the submental triangle, the submandibular triangle. ठीक है, we have talked about two triangles up. ठीक है, ये वाला, this is the submandibular triangle, this is the submental triangle. ठीक है, now talking about this particular triangle that is called as the carotid triangle. ठीक है, again if I talk about the submental, this is here we saw the submental triangle, here we saw the submandibular triangle, and here we can appreciate the this thing carotid triangle. ठीक है, we can see the carotid triangle present here, and in the end the last one that is present here, this one. ठीक है, so here we can see we are calling it as the muscular triangle. So we can see that it is more or less quadrilateral in shape, चार sides है इसके. ठीक है, rather than having three sides, but we
consider this as a triangle only. Okay, but we can see here that we will be talking about 4 borders of this particular sub triangle, but we can say that more or less it is a triangle. We call it as a triangle only. Okay, and that is called as the muscular triangle. So we have got the muscular triangle here, we have got the carotid triangle here, we have got the submandibular triangle, this one, and we have got the submental triangle here. I hope everyone got an idea about these 4 sub triangles. यहाँ तक clear? Yes, sir. ठीक है. Okay, now let's start with the first one, that is the submental triangle. So easily we can say that if so this I can ask you as well. So if I ask you the medial border of the submental triangle, can anyone tell me what? Sagittal plane. Yeah. Line. It is the midline of the neck, na? Midline of the neck. ठीक है? It makes the medial border of the submental triangle inferiorly by which bone? Hyoid. Just don't have a look at the जो लिखा हुआ है, just have a look at this particular triangle only, है ना? By the superior border of the hyoid bone, you can say, है ना? And laterally by which muscle? Exactly. Yeah, by the anterior belly of the digastric, or you can say the medial border of the anterior belly of the digastric, and this is the posterior belly यहाँ पे, है ना? And this is the anterior belly. Okay, so this is a submental triangle. ठीक है? We know the now we know the boundaries of the submental triangle, and here we can see we have got certain submental lymph nodes. Okay, can anyone tell me कि lymph nodes होता क्या है? What are the lymph nodes? Even we have got a lymphatic system in our body, ना? Can anyone tell me what are lymph nodes? नाम सुना है? Basically these are you can say, if we have a look at the हाँ निशा कुछ बता रहे हो? I hope I am audible to everyone. हाँ ठीक है. तो we can say that we have got this tissue fluid, है ना? जो tissue fluid present होता है, that is called as the lymph, and that flows throughout the body, and that flows through the lymphatic system. ठीक है? We have got some vessels through which the lymphatic that is called as the lymphatic system, through which that fluid flows. And उसी में भी see we have got certain beaded structures, ना? कुछ beaded structures हमें देखने को मिलते हैं ना at regular intervals, and those are called as lymph nodes. And can anyone tell me lymph nodes में present क्या होता है? lymph नाम अगर पढ़ रहा है, हाँ राम्या कुछ बता रहे हो? Lymph is present in lymph nodes, sir, which is a colorless fluid which contains heavy molecules which cannot be transported through blood. Yeah, okay, we have got the lymphatic fluid. Along with that, in the lymph nodes we have got the lymphocytes. ठीक है? lymphocytes हमारा क्या होता है? WBC ना? erythrocytes, lymphocytes and thrombocytes हम बोलते हैं ना? We have got the lymphocytes as well, and lymphocytes जो है that again that helps us to prevent some in case let's say if there is any pathogen which is trying to affect our body, so we can say that we have got these lymph nodes which entrap those pathogens and prevent us from having any pathological condition because of that pathogen. ठीक है? तो we have got these lymphocytes as well which are present inside the lymph nodes. ठीक है? And of course we have got the lymphatic system, and for lymphatic drainage हमारे पास 2 तरह के lymphatic drainage होते हैं. एक हमारे पास कौन सा होता है? 2 ducts. Actually we have got 2 ducts. One is called as the thoracic duct and another one is called as the lymphatic duct. We will talk about this in कहाँ पे thorax anatomy में we will talk about this, but we can say that we have got 2 ducts. 2 duct होते हैं. Duct क्या मतलब? Duct मतलब एक you can say a bag like structure, या एक space where eventually the whole of the lymphatic fluid of the body, it eventually drains into that particular region. ठीक है? तो we have got 2 different ducts. One is called as the thoracic duct and another one is called as the lymphatic duct. ठीक है? Okay, so we will talk about this in detail in the thoracic anatomy. ठीक है? But we should know that we have got the lymphocytes as well present in the lymph nodes, and lymph nodes are these beaded structures जो कि हमारे lymphatic lymph जो present lymphatic जो system present होता है उसमें continuously present होते हैं. ठीक है? Just to entrap the pathogen if that is trying to affect the body. ठीक है? Okay, so we can see we have got certain lymph nodes present in the submental triangle, and we have talked about the boundaries, the hyoid bone inferiorly, ठीक है, medially the midline of the neck, and laterally we have got the superior belly of the digastric. ठीक है? And we can appreciate that the floor of the submental triangle is made by which muscle? ये कौन सी मसल है? Mylohyoid. Yeah, that is the mylohyoid. ठीक है? We have got the mylohyoid making the floor of the submental triangle. Okay,
we have talked about the submandibular triangle. Now coming up to the submandibular triangle. ठीक है? Here only can anyone tell me कि the medial border of the submandibular triangle made by which muscle? Lateral surface of anterior belly of digastric. Yeah, lateral. You can say the lateral border of the anterior belly of the digastric. Okay. Laterally made by this particular muscle, that is the posterior belly. Hmm. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको. हाँ, and we have got the what we can say, we can say the anterior part of the posterior belly of digastric, and superiorly by the, यहाँ पे diagram में इतना properly नहीं दिखाया गया, but it is superiorly, it is being made by the inferior border, you can say the inferior part of the mandible, है ना, mandible bone. ठीक है, is mandible a paired bone or an unpaired bone? Unpaired. Okay, can anyone tell me one more unpaired bone of the facial skeleton? Femur. That is the femur, है ना, and except this all the other bones are paired, है ना. You got the rest, all the paired bones in the facial skeleton. ठीक है, हाँ, okay. हाँ, we have got the femur that is unpaired, and the mandible that is unpaired. Okay. ठीक है, so here we can see superiorly by the body of the mandible, anteriorly by the anterior belly of digastric, and the posterior belly of digastric posteriorly. ठीक है, that is the submandibular triangle. ठीक है, and we can say that we have got certain salivary glands, particularly the submandibular gland. Can anyone tell me the name of all the three salivary glands? तीन salivary glands होते हैं ना मेरे पास. Parotid, हाँ, Parotid. submaxillary and submandibular ना, ये तीन होते हैं. Submaxillary, submandibular and the parotid ना, they are supposed to secrete, क्या secrete करते होंगे? Saliva, that is called as salivary amylase ना, salivary amylase. Yes, sir. And salivary amylase, can anyone tell me the function of salivary? Let's discuss this. Salivary amylase का function क्या होता है? It breaks down, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन द स्टार्च, द शुगर है ना, द ग्लूकोज, बेसिकली द स्टार्च इनटू ग्लूकोज है ना. जो लेट्स से अगर हम रोटी या फिर राइस अगर हम लेते हैं अगर माउथ में, तो उस केस में हम देखते हैं ना, वी हैव गॉट दिस स्वीट टेस्ट दैट वी कैन फील ऑन द टंग. तो इट मीन्स दैट, है ना, and we can say that the salivary amylase, it converts into tylen. The salivary amylase, it breaks down the starch and gets converted into tylen, PTYLIN. सबने सुना है नाम PTYLIN? This I'm talking about कौन सा, I think 8th-9th क्लास वाली साइंस, उसमें हम पढ़ते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम. तो salivary amylase gets converted into tylen and it breaks down. And can anyone tell me what is the name given to the food material that is present inside the mouth? जब हम chew करते हैं उसको, that is called as Bolus. that is called as bolus ना, that is called as bolus, BOLUS, that is called as bolus, है ना. And ठीक है, उसके बाद then we swallow it. Can anyone tell me the process, उस process को कहते क्या है? That is called as peristalsis ना. Deglution भी, हाँ Movement is called paralysis. हाँ, क्या कह रहे हो? Movement is called paralysis. peristalsis. Peristalsis is called as the movement. Deglution can also be the term used. ठीक है, deglution is a more precise term for swallowing, but the movement of the food material through the alimentary canal, that is called as peristalsis. And there can be reverse peristalsis as well ना, that we call it as vomiting, है ना. तो that is called as reverse peristalsis. उसके बाद then the food enters the stomach. Stomach में we have got, is it acidic or is it basic? ये तो सबको पता होगा. Acidic. It is acidic. कौन सा एसिड होता है? HCl. It is the HCl, and okay, and it converts it, and in that case जब stomach में food होता है, at that particular time we call it as CHYLE, chyle ना. Bolus is in the mouth, and then it gets converted into CHYLE, chyle. And then when the food enters the intestine, and that time it is called as chyme, CHYME, chyme है ना. Bolus, chyle and chyme. ठीक है, and ठीक है, और क्या होता है? ठीक है, apart from that we have got various hormones and all those things जो कि हमारा secret हो रहा है, and ठीक है, and can anyone tell me the three different parts of the small intestine? Small intestine, I know बहुत basic है, but पता होना चाहिए.
Ilium, yttrium, radium. इलियम इशियम नहीं हाँ इलियम हमारा उसमें भी आता है या ड्यूडेनम है ना we have got duodenum that the jejunum and the ilium है तो ilium is part is a bone also ना तो ilium लेकिन वहाँ पे नहीं मतलब यहाँ पे small intestine में it is the duodenum the jejunum and the ilium the duodenum is a C shaped structure ना just below the stomach and just at the starting of the intestine ना then we have got the jejunum and then we have got the ilium है ना and okay and then it eventually gets attached to the large intestine the ascending colon the transverse colon the descending colon and then we have got the rectum and then we have got the anus है ना and उससे पहले और क्या होता है 3 parts of stomach के भी तो 3 parts होते हैं ना cardiac Body fundus. fundus and pyloric Body fundus. हाँ we've got the cardiac the fundus the cardiac is the upper हाँ है ना upper lateral region the fundus and the pyloric है ना stomach कहाँ present होता है right side पे left side पे is it present on the right side or on the left side it is on the left side ना it is on the left side ठीक है Left side. हाँ stomach is on the left side अरे ठीक है चलो ओके ठीक है और कुछ दिमाग में अगर आपको लोगों को भी आता है जस्ट लेट मी नो कि आप बताना मेरे को अगर कुछ चीज़ हो रहा है बट बाकी था एलिमेंट्री कैनाल इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी दिस इन द स्कूल आई थिंक 8th 9th क्लास में से कुछ आता है वहाँ पे ओके खैर so we have got this salivary this particular salivary gland that is the submandibular gland apart from that the lymph nodes as well which is the content of the submandibular triangle this particular this triangle and also we have talked about the boundaries the mandible the anterior belly and the posterior belly of the digastric ठीक है okay now coming up to the carotid triangle where the common carotid bifurcates into the internal and the external carotid also we can see that the internal jugular vein so it means कि major structures जो कि हमने discuss किए थे we can say the vascular structures the vein and the arteries those are majorly present inside the carotid triangle ठीक है तो we have got the common carotid artery apart from that the internal jugular vein ठीक है and except that we have got the hypoglossal and the vagus nerve as well so we talked about 5 different cranial nerves है ना which are part of the anterior triangle which are the content of the anterior triangle so we can say out of those 5 we've got these two the hypoglossal and the vagus which are present in the carotid triangle so we can say that major structures are present inside the carotid triangle ठीक है the internal jugular the internal jugular vein the common carotid artery and apart from that the hypoglossal and the spine this thing vagus nerve ठीक है these two nerves as well ठीक है and we can see of course superiorly it is अब ये आप ही बता दो superiorly by which muscle this particular muscle superior border of the carotid triangle हाँ Posterior belly. by the posterior belly of digastric ठीक है हाँ okay this one the inferior border we can say inferior लिखा है superior हाँ inferior लिखा है ना हाँ inferior हाँ inferiorly by the omohyoid this particular हाँ the superior belly of the omohyoid and laterally by the anterior belly of SCM ठीक है I don't think okay ठीक है I don't think I need to talk about the boundaries of these triangles in detail है ना just if you have a look at the image it becomes easier for us to picturize ठीक है and just remember the major structures present inside the carotid triangle and except that we can see okay the last triangle that is the muscular triangle so why the muscular triangle because we can see that most of the muscles especially of course the infrahyoid muscles present inside this particular triangle we can call it as the muscular triangle we can see that we've got 4 boundaries it is more or less quadrilateral in shape but still we call it as a triangle only ठीक है so we can say that the medially it is the midline of the neck of course superiorly by the inferior border of the hyoid then we have got 2 more borders this one the superior lateral and the inferior lateral ठीक है superior lateral inferior lateral then the medial and then the superior ठीक है superiorly by the hyoid medially by the midline superior lateral by this particular by the superior belly of the of the omohyoid है ना by the medial border of the superior part of the omohyoid ठीक है and inferior lateral by the medial border of the you can say inferior part of the SCM okay and as a whole we can see that we have got 4 different borders of this particular structure but we are calling it as a triangle only and okay that is the muscular triangle and here we can see
in this particular triangle we have got certain glands. जैसे कि हमने carotid triangle में देखा, we have got the various neurovascular structures, ना, a vein, an artery, and two nerves, two cranial nerves. Likewise, here we can see in the muscular triangle we have got these glands, that is the pharynx. We have got the pharynx, ठीक है, that is not a gland but the thyroid and the parathyroid glands, ठीक है. We have got the thyroid gland, the parathyroid gland. Apart from that we have got the pharynx and a bunch of infrahyoid muscles as well. So infrahyoid muscles, this we know, okay, of course this particular, the muscular triangle covers a lot of infrahyoid muscles, but apart from that we can see we have got the thyroid and the we will talk about these glands also. So we can see that we have got the thyroid and the parathyroid glands. Apart from that we have got the larynx, sorry, the pharynx as well, okay. Okay, so now let's talk about the glands as well as the larynx and the pharynx. So we can see कि pharynx is part of this particular triangle, okay. But let's talk about first of all let's talk about the larynx and the pharynx. उसके बाद we will talk about the glands, okay. Okay, so here we can see, of course, this is the nasal cavity, no? This is the nasal region, this is the nasal cavity, and this is the buccal cavity, no? We call it as the buccal cavity, through which of course we take the food, है ना. Okay, and again if we have a look at the structure, we can see here that we have got this region that is called as trachea, है ना. Trachea, कोई बताएगा trachea क्या होता है, trachea का क्या function होता है? Trachea, I hope everyone has heard about trachea. Yes, airflow from nose. हाँ, to for the lungs. it takes the air, na, from the nose up to the lungs, and then we see trachea bifurcates, है ना, into into two bronchi, primary bronchi, and then two bronchioles, and then eventually into alveoli, है ना, ठीक है. Okay, ठीक है. तो we can see that we have got the trachea. Trachea के ऊपर there are certain structures which are present on the trachea which prevent the trachea from collapsing. Can anyone tell me कि क्या structures present होते हैं? There are some Epiglottis. अरे epiglottis Lymphoid cartilage. epiglottis हमारे यहाँ है. हाँ, किसी ने कुछ बोला था? हाँ निशा. Lymphoid cartilage. The cricoid cartilage. हाँ, cartilage, हाँ, we have got semicircular cartilaginous rings which are present on the outer, you can say outside the, or you can say which encircles the trachea. We have got semicircular cartilaginous rings which are encircling the trachea, which eventually prevents from its collapse. Let's say जब हम when we exhale, तो exhalation के time पे of course we can see that the pressure inside the air pressure inside the trachea is much less than the atmospheric pressure, है ना. And because of that, of course, because of the pressure of the atmospheric जो air है, it can try to collapse, है ना. Collapse means कि हमारा जो trachea है वो उसका space decrease हो सकता है. The same principle that we can see in I hope सबने वो देखा होगा, वो जो पता नहीं हम उसको चिपकू बोलते हैं, आप लोगों को I don't know कि आप क्या बोलते हो, बट जिससे हम फ्रिज पे या कुछ ना कुछ वो चिपकाते हैं, जो एयर सक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है. हैज़ एवरीवन सीन दैट? देखा सबने? हाँ, वैक्यूम कप यू कैन Yes, से और sir. समथिंग, है ना. तो ओके, तो उसमें क्या प्रिंसिपल होता है? ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल इज कि व्हेन वी प्लेस इट अगेंस्ट सरफेस, ऑफ कोर्स इसमें कम से कम मतलब क्या कहते हैं, उसका जो सरफेस है वो अगर मतलब यू कैन से वेल पॉलिश्ड या फिर हो, जहाँ पे देर इज़ नो स्कोप ऑफ एनी एयर टू एंटर इनसाइड द रीजन. तो इन दैट पर्टिकुलर एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन सी दैट अगर उस स्ट्रक्चर को, अगर उस क्या कहते हैं उसको, जो कप है उसको अगर हम उस वॉल पे या फ्रिज पे कहीं पे भी अगर हम चिपकाते हैं, तो ऑफ कोर्स इनसाइड जो उसके अंदर जो प्रेशर है वो अब हमने नेगेटिव कर दिया ना, नेगेटिव प्रेशर कर दिया है. एंड उसके बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसके ऊपर, मतलब एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर पुट कर रहा है उसके ऊपर, है ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमूव दैट थिंग फ्रॉम अ वॉल और फ्रॉम द फ्रिज, है ना. तो लाइकवाइज हियर वी कैन सी द सेम थिंग, है ना, कि जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ट्रैकिया प्रेजेंट है, ट्रैकिया से जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, तो एक्सहेल करने के बाद में जो एयर है that will decrease, है ना, and we can say the air pressure inside the trachea will decrease than the atmospheric pressure, and because of that the atmospheric pressure will try to
squeeze, you can say, the trachea ना, trachea को squeeze करेगा, and the shape of the trachea can deform है ना, or you can say it can collapse, and to prevent that we have got these cartilaginous rings wrapped around the trachea so that it prevents it from going into collapse ना. Just posterior to that यहाँ पे trachea ये है, trachea के पीछे ये region क्या है, कोई बताएगा? This is esophagus ना, this is the esophagus, Esophagus. ठीक है, हाँ, this is the esophagus, ठीक है. तो we have got this the trachea, and this just posterior, just behind that we have got the esophagus. Esophagus is for deglutition ना, peristalsis, ठीक है, okay. And we have got, ठीक है, तो now we can say we have got two regions. One is the pharynx. Pharynx is the region जो कि हमारा, you can say, at the junction, it is present, the junction of the nasal cavity as well as the buccal cavity. The junction is called as the pharynx. इस region को हम pharynx कह रहे हैं, ठीक है. And the region just above the trachea we call it as the larynx, ठीक है. And we can say that the pharynx is part of both the digestive system as well as the respiratory system, of course, because respiratory system का भी part है and digestive system का भी part है, the pharynx, ठीक है. Just keep in mind this thing. And but if we talk about the larynx is just part of the respiratory system ना, not part of the digestive system. Respiratory system. Okay, ठीक है. And also we can see here, if we talk about the parts of the larynx, we can see we have got the upper part of the larynx. Here we can see this structure that is called as epiglottis. So the mid part of the larynx is called as the glottis, ठीक है. Glottis जो whole जो structure है, the upper part, or you can say the upper part or the starting part of the trachea, that is called as the larynx, and the mid part of the larynx, a part of larynx, is called as the glottis. Glottis का upper part, above the glottis we have got the epiglottis, of course, which कोई बताएगा इसका फंक्शन क्या होता है एपिग्लॉटिस का? इट इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ना, जो कि क्लोज एंड ओपन होता है, हाँ. इट प्रिवेंट्स द फूड, है ना, फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया. ये करता है व्हेन वी, तो यू कैन ट्राई दिस थिंग दैट व्हेन यू आर स्वेलिंग समथिंग, जब आप स्वेलो कर रहे हो उस टाइम पे यू कांट ब्रीथ व्हेन यू आर स्वेलिंग, बिकॉज of course at that time the epiglottis is closed, है ना. Epiglottis is a flap like structure, it closes the larynx, है ना, it closes the trachea, and so that at that particular time we can easily swallow. But let's say अगर हमारा epiglottis present नहीं होता, in that case there was a high chance that the food might enter the trachea, and of course that would have led to various serious conditions, ठीक है. And that is called the epiglottis. And then we have got the glottis. We have got an infraglottis as well, जो कि हमारा glottis के नीचे present होता है, but we can say that as a whole that is all part of the larynx only, ठीक है. Larynx is present above the trachea, ठीक है. Okay, कुछ बचा तो नहीं इसमें, ठीक है. And then let's talk about these glands. Okay, this is we can say we have got the thyroid gland and the parathyroid gland, ठीक है. This is ये हमारा thyroid gland है, ठीक है. This is the trachea, so we can say that just above on the upper part of the trachea we have got this structure that is called as the thyroid gland, and on the thyroid gland we have got some other glands also that is called as the parathyroid glands. Now talking about the function of the thyroid and the parathyroid gland, तो thyroid gland simply we can say that it releases T3 and T4, इसको हम ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं, ठीक है. आई होप सबने फिजियोलॉजी में ये सब चीज़ें पढ़ी है. नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दीज थिंग्स. आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इनके ऊपर क्वेश्चंस करोगे ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो वहाँ से यू विल गेट दीज थिंग्स क्लियर. एंड इनके बारे में ना जो आपको अगर आपने देखा होगा, मैंने एक PDF और सेंड किया है अलॉन्ग विद द स्टडी मटेरियल. उसमें जो बुलेट पॉइंट्स करके जो लिखा हुआ है, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के बुलेट पॉइंट्स करके डाले हुए हैं, तो उसमें भी इनके बारे में लिखा हुआ है. यू कैन जस्ट गो थ्रू द हाउ दिस स्ट्रक्चर्स फंक्शन एंड क्या इनका क्या होता है. लेकिन here we can have a look that we can say that it releases the thyroid gland, it releases the triiodothyronin and the tetraiodothyronin, and as a whole these thyroid hormones जो है they help in the regulation of the metabolism of the body. If I say the metabolism, it means the weight gain and weight loss, along with that the calories which are being burned, the rate at which the calories are being burned, है ना, the metabolism. So all those things, है ना, the heartbeat, the rate of heartbeat, all those things are being क्या कहते हैं, maintained or regulated by the thyroid gland. And then we have got the parathyroid hormones, of course, which releases PTH, that is the parathyroid hormone. Parathyroid hormone की अगर हमें बात करने,
the term that should come into our mind, that is calcium, or you can say the calcium ions. कैल्शियम का फंक्शन बहुत सारे होते हैं, मतलब अगर हम बॉडी में बात करें तो कैल्शियम फर्स्ट ऑफ ऑल इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड. ठीक है, तो अगर अमाउंट ऑफ कैल्शियम ब्लड में अगर रेगुलेट कर रहा है तो कैल्शियम इन द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग फंक्शन ना, द clotting factors जो होते हैं, in that we can say we have got the calcium ions and that those are responsible for homeostasis हम term use करते हैं. apart from that can anyone tell me कि कैल्शियम का और क्या फंक्शन होता है बॉडी में? एक तो मेजर फंक्शन तो हमें पता है, बोन से रिलेटेड, कोई बताएगा क्या? हाँ हाँ, एंड ऑफ कोर्स कैल्शियम जो है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द बोन स्ट्रेंथ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मसल में कोई बताएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ द कैल्शियम आयंस? I hope everyone has heard about the sliding filament theory. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ा है सबने? एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, है ना? Yes, sir. है ना? तो फॉर द बाइंडिंग ऑफ द एक्टिन एंड द मायोसिन, एक्टिन मायोसिन बाइंड करते हैं आपस में, है ना? एंड तभी हम देखते हैं देर इज दिस मूवमेंट ऑफ दिस टू वी कैन से proteins, and because of that there is contraction or relaxation of the muscle. So for that also we can say for the binding of the actin and the myosin, these we have got these calcium ions. Because of the calcium ions these two structures they bind to each other, the actin and the myosin. ठीक है, एक को हम थिन फिलामेंट कहते हैं, एक को हम थिक फिलामेंट कहते हैं ना. कैन एनीवन टेल मी थिक फिलामेंट कौन सा है, थिन फिलामेंट कौन सा है? एक्टिन इज द थिन वन, है ना, थिनर वन. एक्टिन इज द थिन फिलामेंट एंड मायोसिन इज थिक फिलामेंट. थिक फिलामेंट है, ठीक है, ओके. तो ठीक है, तो फॉर दैट ऑल्सो वी कैन से, तो इट मीन्स कि कैल्शियम का ऑफकोर्स तीन तो हमने बातें कर ली, तो बोन से रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड में हमने बात कर ली फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंड फॉर द muscle contraction also for the actin and the myosin to bind, we require the calcium ions. ठीक है, okay, तो we have talked about the thyroid and the parathyroid gland, and of course we have talked about the structures, the larynx and the pharynx also. ठीक है, okay, now coming up to the posterior triangle. I hope till now we are clear with the as a whole all the contents of the anterior triangle. ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी 5 cranial nerves and a vein and an artery. Apart from that हमने सब triangles के बारे में बात कर ली, and the content of each sub triangle. Specifically we need to talk about the content of the carotid triangle and the muscular triangle, because that is important, है ना, carotid triangle में and the muscular triangle. ठीक है, now we are supposed to talk about the posterior triangle. I hope till now we are clear. Yes, sir. Okay, okay, simply अगर posterior triangle, अगर हमने anterior triangle हमने समझ लिया है, तो it is much easier for us to understand the posterior triangle, because there is not much complexity when it comes to the posterior triangle. So we can see, of course, it is the posterior border of, can anyone tell me the borders of the posterior triangle? It's yes. Anteriorly by Mastoid. हाँ, Inferior is formed by clavicle, middle part, middle part, हाँ, and posteriorly posterior part is formed by anterior border of trapezius. of the trapezius, है ना. We have got the anterior border of the trapezius, which makes the posterior border of the posterior triangle. ठीक है, the posterior border of the SCM and the upper border of the middle 1/3 of the clavicle. ठीक है, now we can see we have got a bunch of muscles जो कि which are present inside the posterior triangle. एक तो इसमें हम देख रहे हैं कि we will talk about this particular muscle, of course that is the infrahyoid infrahyoid muscle तो है, the which muscle? Omohyoid. Inferior belly of the omohyoid, है ना, which divides the posterior triangle into two sub triangles, है ना, a smaller triangle inferiorly and a big triangle superiorly. ठीक है, we will talk about these triangles. लेकिन इसके अलावा we can see we have got a bunch of different muscles जो कि हमारे यहाँ पे present होती है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस येलो वन दैट इज द लिवेटर स्कैपुला. कैन एनीवन टेल मी द अटैचमेंट, हमने बात करी है, द अटैचमेंट ऑफ द लिवेटर स्कैपुला, proximal and distal, Angle of scapula. the superior angle of the scapula, and proximally with C1 C2 C3 C4. C1, C2. हाँ, C1 C2 C3 C4. ठीक है, the transverse processes of C1 C2 C3 C4. ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे और कुछ मसल्स आ रही है. यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट एंटीरियर स्केलिन, द मिडल स्केलिन.
इसके अलावा एक पोस्टीरियर स्केलिन भी हमारे पास होता है, बट आई थिंक वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द स्केलिन मसल्स एज अ होल ना, तो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द स्केलिन एज वेल. इसके अलावा वी हैव गॉट द स्प्लीनियस कैपिटस. वी विल टॉक अबाउट द स्प्लीनियस कैपिटस इन द सब ऑक्सीपिटल मसल्स. कैन एनीवन टेल मी सब ऑक्सीपिटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सब ऑक्सीपिटल बिलो द ऑक्सीपिट है ना, एंड आई थिंक वी हैव बीन रिलीजिंग दीज मसल्स वेरी फ्रिक्वेंटली ना, काफ़ी. जैसे अगर अगर कोई नेक पेन का पेशेंट आता है, या फिर लेट्स से इफ देयर इज अ पेशेंट हु कंप्लेन्स ऑफ द पेन दैट इज रेडिएटिंग अप टू द हेड, तो इन दैट केस वी से दैट frequently we see that the suboccipital muscles are under tightness. I think सबने देखा होगा suboccipital muscles काफ़ी ज़्यादा tightness में जाते हैं. So there is a deformity because of which we can see that the suboccipital muscles are going into tightness. Can anyone tell me? Over a period of time we see कि एक person का एक particular type of deformity में जो वी कैन से द सर्वाइकल एंड द अपर थोरैसिक स्पाइन जो है वो चला जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द पोक चिन पोस्चर है ना, और द फॉरवर्ड नेक पोस्चर. सबने सुना है इसके बारे में, फॉरवर्ड नेक पोस्चर? नहीं स्वान नेक. हाँ क्या चीज़? द पोक चिन पोस्चर. स्वान नेक तो डिफॉर्मिटी है ना, स्वान नेक डिफॉर्मिटी तो हमारा फिंगर में आती है, वो अलग चीज़ है. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड नेक पोस्चर की, या फिर इसकी पोक चिन पोस्चर की. तो इसमें हम क्या देखते हैं पोक चिन पोस्चर में? चलो इसमें फिर वैसे टाइम है हमारे पास. ओके, तो पोक चिन पोस्चर में हो क्या रहा है, मतलब हमारा सर्वाइकल स्पाइन में बट हमारे पास क्या प्रेजेंट है? वी हैव गॉट द सर्वाइकल लॉर्डोसिस और सर्वाइकल काइफोसिस. सर्वाइकल रीजन में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? सर्वाइकल लॉर्डोसिस है ना. इट मीन्स द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन विच इज concave posteriorly, that is called as lordosis है ना, and जो which is convex posteriorly, that is called as kyphosis. तो if we talk about the line of gravity of जो कि हमारा can anyone tell me line of gravity क्या होती है? ये एक टर्म इम्पॉर्टेंट है समझना. कोई बताएगा लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? Line passing through the center of gravity. Yeah, you can say the line passing through the center of gravity. ओके, तो क्या असली में एक्चुअली में लाइन ऑफ ग्रेविटी कुछ प्रेजेंट होती है, कुछ होता है लाइन ऑफ ग्रेविटी? It is an imaginary line. Yeah, it is an imaginary line, and center of gravity is also an imaginary point, है ना. But of course we know that each and every, you can say, cell of the body, we have got the gravitational force that is acting on each and every part of the body, है ना. And अगर हम बनाना चाहे force vector, तो we have to make this, है ना, this type of force vector, मतलब inferiorly directed and towards the ground at each particular part of the body. But that will become a tedious job for us, na. So as to ease out the job, so as to make things easier for us, na, to understand. For that we just imagine a particular point in the somewhat in the center of the body. Okay, and we imagine that the whole mass of the body is concentrated on that particular point, you know, that, and we call it as center of mass. For this is for just for the ease of understanding the concept. But apart from that, if we talk about this thing in practicality, we can see of course the gravitation force is acting on each and every point of the body. Okay, okay, and there is a line, of course, which is passing through the center of gravity, that is called as the line of gravity. Okay, so if we have a look at the line of gravity, it is passing, you can see it is passing a bit posterior to the cervical spine, na? Cervical spine ke it is passing posterior to the cervical spine. I hope everyone can picturize this thing, can see this thing, okay? Okay, then we can see that the line of gravity passes anterior to the thoracic spine. Okay, now what we see कि हमारी जो line of gravity होती है over a period of time, of course, because of the weakness of certain muscles, the body has this tendency to move towards the line of gravity. इसका मतलब कि let's say हमारा line of gravity is if it falls anterior to the thoracic spine, ठीक है, तो we can see over a period of time with the passage of time, we can see that जो हमारा thoracic spine जो है, it will try to move more towards the line of gravity, है ना. And because of that we see after a period of time, as the person grows old, the thoracic जो spine का जो kyphosis है और the curvature जो है, that increases. ये होता है
तभी हम देखते हैं ना इन द ओल्ड इंडिविजुअल्स दे हैव गॉट दिस ट्रूप पोस्चर, जहाँ पे उनका thoracic kyphosis इज एक्सेसिवली मोर देन वट इट शुड बी एक्चुअली. आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि सबको समझ आ रहा है ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ. Yes, sir. ओके, इट मीन्स कि हमारा एंड लाइकवाइज अगर हम लाइन ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं इन द सर्वाइकल स्पाइन, तो वी कैन सी दैट ऑफ कोर्स इट इज पासिंग posterior to the cervical lordosis, and because of that the cervical spine has got this tendency to increase the cervical lordosis over a period of time. I hope everyone got this thing. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट है ना, यही रीज़न है जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी दैट द सर्वाइकल लॉर्डोसिस इंक्रीजेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सर्वाइकल द सब ऑक्सीपिटल मसल्स प्रेजेंट हेयर दे गो इनटू टाइटनेस, and the muscles present opposite to that, the neck flexors, they go into, they are in the lengthened position, or we can say they go into weakness. यही होता है. ठीक है. The neck flexors they are going into weakness, and the neck extensors they go into tightness, because the cervical lordosis increases over a period of time. And इसका opposite we can see here. With the passage of time we can see the thoracic kyphosis is increasing because it has this tendency to move towards the line of gravity. ठीक है. And because of that we can see the muscles which are present anteriorly are going into tightness or into shortening, and the muscles which are present posterior to this particular region, they go into lengthening, or you can say they go into weakness. And as a whole this whole concept we call it as, कोई बताएगा इसको हम क्या कहते हैं? Upper cross syndrome ना. हाँ, तो in this particular cross we can see the upper these muscles, the neck flexors and the upper back muscles है ना, the upper back extensors, they are going into weakness, and these set of muscles are going into tightness. Okay. There is one more you can say concept जिसके basis पे हम बोलते हैं कि when we talk about the poke chin posture or the forward neck posture, what we see कि first of all if I ask you, पता नहीं, I don't know कि मैं इतना डिटेल में जाऊँ सबको चीज़ समझ आएगी कि नहीं, बट if I ask you कि the movement arm जिसके अराउंड हमारा ये मूवमेंट हो रहा है ऑफ मतलब स्पाइन का, लेट्स से सबसे पहले अगर हम सर्वाइकल स्पाइन की बात करते हैं, सर्वाइकल स्पाइन में द लाइन ऑफ ग्रेविटी of course it is passing posterior to the cervical vertebrae, but we can see the distance, or you can say the shortest distance between the cervical vertebrae and the line of gravity is not as much as we can see here, जितना हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जब हम when we are talking about the shortest distance between the upper thoracic spine and the line of gravity. ये चीज़ सबको समझ आई? Yes, sir. The shortest distance है, the shortest distance that is between the upper thoracic spine and the line of gravity is much more in the upper thoracic spine है ना, and it is not that much in the cervical region, and because of that, so we इसी shortest distance को we are calling it as the movement arm, or we can say this is the movement arm because of which the upper thoracic spine is going into more amount of kyphosis. ठीक है. और यू कैन से इट इज गोइंग इनटू मोर लॉर्डोसिस. ओके, तो अब लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स द लाइन ऑफ ग्रेविटी इज मच मोर इन द अपर थोरेसिक स्पाइन, तो इट मीन्स कि अपर थोरेसिक स्पाइन इज मोर टेंडेंसी टू गो इनटू मोर अमाउंट ऑफ काइफोसिस देन द अपर देन द सर्वाइकल स्पाइन गोइंग इनटू लॉर्डोसिस. जो अपर थोरेसिक स्पाइन है इसकी ज़्यादा टेंडेंसी है ना काइफोसिस में जाने की than the cervical spine, because movement arm is more for the upper thoracic rather than the cervical spine. I don't know सबको समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. तो because of that we will see पहले टाइप की डिफॉर्मिटी हमारी बॉडी में अगर देखने को मिलेगी, that is supposed to be excessive or increased thoracic kyphosis. दैट इज़ द फर्स्ट. एंड ये चीज़ हम आई थिंक अपने बॉडी में तो मैं बहुत नोटिस करता हूँ कि मतलब व्हेन आई एम मतलब इन ए नॉर्मल, मतलब जो मैं नॉर्मल पोजीशन में, जैसे लेट्स से मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ या फिर कभी भी किसी टाइम पे, इफ़ आई कॉन्शियसली ट्राई टू थिंक अबाउट द पोस्चर ऑफ माई बॉडी, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ माई एक्सजरेटेड कर्वेचर ऑफ द अपर थोरेसिक स्पाइन, इंक्रीज काइफोसिस. ऑफकोर्स हमारा सर्वाइकल लॉर्डोसिस भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेजरली हम देखते हैं कि हमारा अपर थोरेसिक का काइफोसिस ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, एक्सेसिव.
उसका रीज़न हमें समझ आ गया, बिकॉज वी हैव गॉट मोर मूवमेंट आर्म इन द अपर thoracic स्पाइन rather than the momentum of the lumbar spine. ठीक है, तो we can say because of the increased amount of kyphosis, it is a consequence of the increased amount of kyphosis because of which we can see there is an increased amount of lordosis of the cervical spine. ये सबको समझ आया कि नहीं? Yes. ठीक है, कि हमारा मूवमेंट आर्म ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा टेंडेंसी हमारी अपर thoracic स्पाइन की ज़्यादा होती है टू गो इनटू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ काइफोसिस, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट वी कैन सी कि हमारा सर्वाइकल स्पाइन जो है वो दैट इवेंचुअली गोज इनटू इनटू लॉर्डोसिस. या फिर इसको मैं इस तरह से दिखाऊं कि ओके, तो इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि मेरी अपर बैक की काइफोसिस में जाने का चांस ज़्यादा है दैन द सर्वाइकल स्पाइन. तो इसका मतलब है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कैन सी, आई होप मैं दिख रहा हूँ. Yes, sir. ओके, ठीक है, आई होप आई एम नॉट लुकिंग फनी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट मीन्स कि अपर thoracic स्पाइन जो है इट इज़ गोइंग इनटू इंक्रीज्ड काइफोसिस. ठीक है, बिकॉज ऑफ द मोर अमाउंट ऑफ मूवमेंट आर्म. अब अगर इंक्रीज काइफोसिस में गया तो कैन यू हैव अ लुक एट माई विजन कि मेरा विजन कहाँ जा रहा है. अगर मेरा thoracic स्पाइन जो है अगर वो इंक्रीज काइफोसिस में जाता है तो इन दैट केस डोंट यू थिंक कि मेरा जो आई का जो विजन है दैट इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स. आई का विजन जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है ना. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन माई साइट, है ना, अपनी साइट को मेंटेन करने के लिए आई हैव टू कीप माई नेक इन इंक्रीज्ड लॉर्डोसिस और increased amount of extension you can say, so as to maintain the site parallel to the ground, है ना. ये सबको समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट मीन्स कि बिकॉज ऑफ द मोर अमाउंट ऑफ मोमेंट आर्म द अपर thoracic spine is going into increased kyphosis. Because of that my I have to maintain my site because my site is now downwards towards the ground and I have to maintain it parallel to the ground. So as to maintain it, I have to keep my cervical spine into increased kyphosis, and because of that we can see over a period of time the suboccipital muscles they are going into tightness and the neck flexors going into weakness. And that is we can say that is the you can say the mechanism which is being followed, because of which we can see why certain set of muscles go into weakness and why certain set of muscles go into tightness. ठीक है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी एक बैच में स्टूडेंट ने पूछा था कि that people say that because of more usage of the mobile phone our suboccipital muscles are going into tightness. But ऐसा कैसे हो रहा है? But when we are using the mobile phones we are keeping our neck in the flex position ना. But how come the suboccipital muscles are going into tightness? I think सबको क्वेश्चन समझ आया कि जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो नेक इज़ इन द फ्लेक्स पोजीशन ना. नेक इज़ इन द फ्लेक्स पोजीशन, बट why do we say then कि हमारा suboccipital muscles go into tightness? It is because when we are using the mobile phone, or you can say when the person is using a laptop or anything, so in that case we can see majorly the deciding factor is the upper thoracic spine. It is more into this thing, more amount of kyphosis, and as a consequence of that eventually except the time when we are not using the phone, in the time when we are not using the mobile phone, at that time we have to maintain our cervical spine into increased lordosis so as to maintain the sight. ठीक है, बिकॉज हमारा thoracic spine जो है वो ऑलरेडी दैट इज in an increased kyphotic posture. ठीक है, and because of that we see eventually the neck extensors go into tightness and the neck flexors go into weakness, and that as a whole that is the upper cross syndrome. Okay, I hope कुछ नया समझने को मिला. ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? हाँ, ठीक है. अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस मसल ना, द कौन सी Posterior थी, triangle. द स्कैलिन. हाँ, स्कैलिन के बारे में हम बात कर रहे थे ना. तो स्कैलिन का अगर हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटीरियर स्कैलिन एंड द मिडल स्कैलिन. हम यहाँ पे आए कैसे? आई डोंट नो, हम इस पे कैसे पहुँचे? जो भी है. Posterior triangle. हाँ, हम posterior triangle की content की बात कर रहे थे. कंटेंट से हम सीधा उस पर पहुंच गए थे. चलो कहीं से कहीं पहुंच जाते, लेकिन दैट वाज बेसिकली द बायोमैकेनिक्स यू कैन से कि हाउ
बायोमैकेनिक्स में वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग, हाउ दैट थिंग इज हैपनिंग, है ना. दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हम एनाटमी पढ़ते हैं बायोमैकेनिक्स में भी यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली, लेकिन वी नीड टू टॉक अबाउट कि हाउ दैट थिंग इज़ हैपनिंग. ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसे मूव कर रही है, दैट इज़ बेसिकली बायोमैकेनिक्स. उसके अलावा स्ट्रक्चर्स तो हमने एनाटमी में पढ़ लिया, ठीक है. तो हाँ ठीक है, तो हम स्केलिन के बारे में बात कर रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटीरियर स्केलिन एंड द लैटरल स्केलिन. तो एंटीरियर एंड लैटरल स्केलिन दे हैव देयर इंसर्शन ऑन द फर्स्ट रिब. जस्ट रिमेंबर दिस, anterior scalene and the middle scalene, they have their insertion on first rib. The posterior scalene has its insertion on the second rib, ठीक है. anterior and middle scalene having insertion on the first rib, posterior scalene having its insertion on second rib, ठीक है. And if I talk about the origin or the upper proximal attachment of these muscles, तो इनका एक एक छोड़ के होता है. मतलब यू कैन से C1 C2 C3 C4 फॉर द एंटीरियर स्केलिन, then C2 C3 C4 C5 you can say for the middle scalene, then C3 जो भी है C3 C4 C5 C6 for the posterior scalene, ठीक है. and we can say that anterior scalene is सबसे इसका जो origin है that is present on the superior part, upper part of the cervical spine. Then we can see on the more inferior part of the cervical spine, or you can say more caudal part of the cervical spine पे हमारा origin होता है for the middle and the posterior स्केलिन्स, ठीक है. कॉर्डल कोई बताएगा कॉर्डल का मतलब क्या होता है? CAUDL कॉर्डल. हम कॉर्डल टर्म यूज करते हैं, कॉर्डल ग्लाइड. मींस टाइल रीजन इन्फीरियरली ना, इन्फीरियर है ना. आई होप आपने यही बोला इन्फीरियर ना. हम वी से वी हैव टू गिव कॉर्डल ग्लाइड्स या फिर क्रेनियल ग्लाइड्स, है ना. या फिर इट मूव्स कॉर्डली, इट मूव्स क्रेनियली मीन्स ऑफ कोर्स मूविंग टुवर्ड्स द क्रेनियम, है ना. और इट मूव्स कॉर्डली मीन्स इट मूव्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द कॉर्डली, टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है. ओके, तो वी गॉट दिस लिवेटर मसल्स. तो इसमें नहीं द स्केलिन, जिसमें एंटीरियर एंड मिडल स्केलिन प्रेजेंट है, विच इज अगेन प्रेजेंट इनसाइड द पोस्टीरियर ट्रायंगल. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट, ठीक है, दिस मसल्स वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. एंड we have got the posterior, the inferior belly of the omohyoid, which divides the posterior triangle into two sub triangles. ओके, ठीक है, ये हमने बात कर ली इसकी. एंड ठीक है, सेम इमेज यहाँ पे है थोड़ी और क्लियर्ड वर्जन में. तो ओके, ठीक है, इतना हमें समझ आ गया. हाँ, एक चीज़ और है. कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ द स्केलिन्स? स्केलिन का मेजर फंक्शन क्या होता होगा? इट इज़ मेजरली फॉर द रेस्पिरेटरी फंक्शन, ठीक है. आई होप टाइम तो नहीं हुआ. हाँ, रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए हमारा स्केलिन होता है, ठीक है. तो इसका मेजरली व्हाट इट डज, दैट द प्रॉक्सिमल अटैचमेंट ऑफ द स्केलिन दैट इज ऑन द सर्वाइकल स्पाइन, दैट इज फिक्स्ड, एंड द इंसर्शन दैट इज ऑन द रिब्स, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड रिब्स. तो दे कॉन्ट्रैक्ट एंड दे ट्राई टू लिफ्ट द रिब्स अपवर्ड्स, है ना. एंड रिब को अगर लिफ्ट करेगा अपवर्ड्स, तो ऑफकोर्स द थोरेसिक वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड इट हेल्प्स in the ventilation function, ठीक है. तो ventilation के टाइम पे there is the contraction of these muscles which eventually try to increase the volume of the thoracic of the thorax as a whole, ठीक है, of the thorax. Can anyone tell me the major muscle that is responsible for ventilation? Major muscle of ventilation, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा. Diaphragm, exactly, that is the diaphragm. No, intercostals are again there, which are trying to increase this thing, the volume. Of course, if there is any injury or anything because of which the intercostals are not working, still we can see the person will still be breathing, but of course the ventilation will be affected, but at least इतना affect नहीं होगा. Still the person will survive, might survive. लेकिन अगर हम देख रहे कि if the diaphragm is affected, in that case there is very less chance of the person to survive, because diaphragm we can say that is the major muscle of ventilation. diaphragm के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है. And we will talk about this when we will be talking about the thoracic and the abdominal anatomy. So we will see कि how diaphragm tries to increase the surface area by decreasing the volume of the abdominal cavity. We will talk about that. इसके अलावा there is a nerve supply of the diaphragm ना. Does anyone know? किसी को याद है? The nerve supply, the phrenic nerve is the nerve supply for the diaphragm. उसका जो nerve root होता है that is phrenic nerve. हाँ, phrenic nerve C3 C4 C5, ठीक है.
And let's say if there is a person with with spinal cord injury, the first thing that we need to look is whether the spinal cord is injured, whether or not the spinal cord is injured above the C5 level. Okay, कि if there is any injury to the spinal cord above the level, above the C5 level, in that case it is of course an emergency condition, and there the person needs to be rushed towards the ICU there, where we need to provide the ventilatory support, है ना. Ventilator provide करना ज़रूरी है, so as to provide external ventilation, because the person can't survive if there is any injury to the spinal cord above the level of C5. ठीक है, because of course the phrenic nerve will get affected, and because of that the diaphragm will get affected, and because of that the person won't be able to breathe. ठीक है, दैट इज़ द डायफ्राम. विल टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ डायफ्राम. डायफ्राम के बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, एक सेंट्रल टेंडन प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ अटैचमेंट होता है, एंड उसके बाद फंक्शन किस तरह से करता है, वो उसके बारे में हमें बात करनी है, वो आगे की बात है. ओके, नाउ कमिंग अप टू द, बस लास्ट का बचा है इसमें, जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंटेंट of the posterior triangle. तो anterior triangle में भी talked about certain nerves, an artery and a vein, है ना. certain cranial nerves, हमने 5 cranial nerves की बात करी थी. उसके अलावा हमने internal jugular vein and the common carotid artery के बारे में बात करी, and it bifurcates. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं in the posterior triangle. You need to remember all these things. I would say कि first of all पहले हम nerves की बात करते हैं. nerves में सबसे पहले we have talked about the 3 trunks of the brachial plexus. Can anyone tell me the name of the 3 trunks of the brachial plexus? Upper trunk, middle trunk and lower. That is the upper, the middle and the lower trunk. ठीक है, okay. ऑप्स पॉइंट कौन से वाले ट्रंक पे होता है? Upper trunk. अपर ट्रंक पे प्रेजेंट होता है. ओके, तो वी कैन सी द ऑल दीज 3 trunks are present in the posterior triangle first of all. Okay, apart from that we can talk about the cervical plexus as well, and we can say that all the 4 branches which are coming out of the cervical plexus. Just remember these 4 names, because these have been asked quite often in the exam, so you must remember the name of the nerves at least. अगर हमें veins and arteries अगर हमें नहीं भी पता है, just remember the name of the veins, the nerves, because that is important. So we have got the 4 branches of the cervical plexus. We don't need to talk about the cervical plexus इसके डिटेल में, because but we need to talk about the branches, the 4 branches, that is the lesser occipital, that just remember the names: greater auricular, the transverse cervical and the supraclavicular nerve. ठीक है, देखो जहाँ पे कंसेप्ट है वहाँ पे हम कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट हेयर वी नीड टू जस्ट मेमोराइज इट. आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई और मेथड है. We can come up with some mnemonic or something, but we even in the end we need to remember the name of these 4 nerves which are the branches of the cervical plexus, and again which makes the content of the posterior triangle of the neck. ठीक है, the 4 branches of the cervical plexus, the 3 trunks of the brachial plexus, and apart from that the cervical the spinal accessory. Can anyone tell me कि spinal accessory कौन सा नंबर का nerve है? Cranial nerve कौन सा नंबर? That is cranial nerve 11, and the 2 muscles which are innervated by this nerve, 2 muscles. Trapezius and SCM. हाँ, trapezius and the SCM, है ना, इसके बारे में हमने बात करी है. Okay, तो we have got these nerves. That was important. Apart from that you can just remember कि external jugular vein, जैसे हमने internal jugular vein हमने बात करी थी in the anterior triangle. We can say that the external jugular vein part of the posterior triangle, and you can just remember the subclavian vein as well. Of course subclavian, ठीक है, subclavian, that is in the posterior triangle, and you can see here the occipital artery and the transverse cervical artery. Just remember the name. अगर नहीं भी आता तो I don't think ये arteries इतनी properly पूछी जाएगी, but we need to remember the name of the nerves properly, because that might be asked. ठीक है, okay. And I think हमें veins तो easily याद हो गई है, and the muscle that we can talk about is mainly the inferior belly of the omohyoid, that divides the posterior triangle into the upper and the lower part. ठीक है, okay. So here we can see this is the inferior belly of the omohyoid, and it divides into two sub triangles. The upper big triangle, that is called as the occipital triangle. Of course it is below the occiput, we can call it as the occipital triangle, and this one that is called as the subclavian triangle. ठीक है, the subclavian triangle and the occipital triangle here. ठीक है, so here we can have a look that the subdivisions, it is being split by the posterior belly or the inferior belly of the omohyoid into the large upper, that is called as the occipital triangle, and the small lower, that is called as the subclavian triangle. It contains the subclavian artery as well. Okay, just remember that it contains subclavian artery, and that is the subclavian triangle, and the bigger one, that is the occipital triangle. Okay,
ओके, आई होप टिल नाउ वी आर क्लियर विद दिस थिंग. एक चीज़ मुझे और डिस्कस करनी है अभी, लेकिन इसके अलावा यहाँ तक ठीक है. द कंटेंट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट द, Yes, sir. है ना, द एंटीरियर एंड द Yes. पोस्टीरियर ट्रायंगल. हाँ ठीक है. वी हैव टॉक्ड अबाउट द सब ट्रायंगल्स ऑफ द एंटीरियर ट्रायंगल एंड द पोस्टीरियर ट्रायंगल. We have talked about the suprahyoid and the infrahyoid muscles as well. ठीक है. And apart from that we have talked about the boundaries of these sub triangles and the content of these sub triangles also. And ठीक है. इसके अलावा there is this condition that is called as thoracic outlet syndrome. नाम सुना किसी ने? thoracic outlet syndrome. कोई बताएगा इसमें क्या होता है? हाँ स्केलिन टाइटनेस की वजह से भी हो सकता है. दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस. स्केलिन टाइटनेस की वजह से हो सकता है. हाँ हाँ. ओके. तो Compression of neuro हाँ present in thoracic outlet. एग्जैक्टली. ओके ठीक है. हाँ तो इट मीन्स, हाँ जैसे निशा आप भी बोल रहे हो एंड राम्या आप भी बोल रहे हो कि हाँ मतलब देर इज कंप्रेशन ऑफ द न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स बिकॉज यू कैन से बिकॉज ऑफ टाइटनेस ऑफ सर्टेन मसल्स, या फिर कुछ बोनी स्ट्रक्चर्स की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स का टाइटनेस हो सकता है. तो वी कैन सी दैट मेनली द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड द सबक्लेवियन arteries, and we can say that these are the neurovascular structures which might get compressed, and because of that we can see certain symptoms in the upper limb, है ना, like there can be paresthesia, or you can say there can be numbness, and there can be, because of decreased amount of blood supply, the decreased amount of arterial blood supply, there can be जो हमारा मतलब weakness of the muscle, or you can say if a person tries to keep the hand in an elevated position, ना elevation में अगर हम रखते हैं, the person might feel, you can say, weakness, and after in a short span of time that person might bring the hand back, है ना, downwards. So that is because of decreased amount of blood supply, and you can say decreased amount of nerve supply to the upper limb. But क्यों हो रहा है? because there is compression of these neurovascular structures. So there are typically 3 regions ना जहाँ पे इन neurovascular structures का compression होता है. The first region is the interscalene triangle, है ना. पहला मतलब 3 अलग अलग points के बारे में we can talk about, जहाँ पे we can see that these neurovascular structures are getting compressed. ठीक है. तो the first region is the interscalene triangle, that is between, कोई बताएगा कौन कौन सा scalene, कौन सा scalene muscles के बीच में? It is the anterior and the middle scalene. ठीक है. The anterior scalene and the middle scalene, between these two muscles if the structures are getting compressed, ठीक है, तो that can be the first region. इस condition को हम बोलते हैं scalenus anticus syndrome. ठीक है. Scalenus anticus syndrome, that is between that is inside the interscalene triangle, or you can say between the anterior and the middle scalene. ठीक है. तो you can say the scalenus anticus syndrome is a part of thoracic outlet syndrome. आई होप सबको समझ आ रहा है. Yes, sir. ठीक है. लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट अनदर पोटेंशियल रीजन जहाँ पे these structures might get compressed, that is between the clavicle and the first rib. ठीक है. between the clavicle and the first rib. And the third region is you can say the subcoracoid region, or you can say between the coracoid process and the attachment of the pectoralis minor muscle. मतलब of course the pectoralis minor is getting attached on the coracoid process, है ना, and you can say in that particular region, again that can be a potential region where we can see that there might be compression of the neurovascular structures. ठीक है. The interscalene triangle. उसके बाद हमारा दूसरा क्या है? The region between the first rib and the clavicle, and third region can be between the coracoid process and the attachment of the, you can see, the tendon of the pectoralis minor. These can be the 3 potential regions where we can see the compression. There might be compression of these structures, and which can lead to the thoracic outlet syndrome. ठीक है. And there are certain special tests, है ना, for testing the thoracic outlet syndrome. बता सकते हैं? रूस टेस्ट रूस टेस्ट होता है, एडसेंस मैन्यूवर होता है. हाँ, इसके अलावा और भी स्पेशल टेस्ट है. just have a look at the name of these special tests. इसमें मैगी में और भी स्पेशल टेस्ट, I don't remember it right now because of course it will become tedious to remember all the names, but still just go through the names of other special tests. But हाँ, the major test जो कि हम बात करते हैं, that is the AdSense maneuver,
एंड द रूज टेस्ट, रूज टेस्ट में तो सिंपली हम क्या करते हैं, तो बताएगा रूज रूज टेस्ट में हम क्या करते हैं? Does anyone have any idea कि रूज टेस्ट में we bring the arm into abduction? हाँ हाँ निशा कुछ बोल रहे हो? bring the arm in 90 degree of हाँ एलिवेट करके उनके रेस को ओपन और क्लोज बंद करने के लिए हाँ हाँ वी ओके, तो हम 90 डिग्री ऑफ आर्म एबडक्शन करके 90 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन करके उसके बाद देन वी आस्क द पर्सन टू क्लोज एंड ओपन द फिस्ट continuously, and because of that closing and opening of the fist वो क्या करेगा, that will try to dissipate the amount of blood that is present in the distal parts, मतलब in the fingers and in the hand, and in some time we will see that of course the person will feel numbness, and that can be a test to for this thing. Apart from that there is this AdSense maneuver ना, जहाँ पे इसमें अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू एलिवेट और यू कैन से एबडक्ट द आर्म, है ना. तो इसमें अगेन वी कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट ट्राई टू एबडक्ट द आर्म सो दैट if there is a compression, तो we can see कि person will try to apprehend, है ना. person will say कि the person is feeling numbness because the structures are getting compressed. Let's say if we can't see any symptom, in that case we ask the person to lateral flex the head, है ना. head को भी laterally bend करते हैं same side की तरफ. उसके बाद still if we can't see any symptoms, in that case we ask the person to laterally rotate the head as well towards the same side for more amount of compression, है ना. So likewise we try to increase the amount of compression, and then we see if there is any symptom that we can appreciate, that then we can say that the thoracic outlet syndrome is positive in that particular case, in that person. ठीक है. Okay, and Scalenus anticus syndrome again part of the thoracic outlet syndrome only. ठीक है. Okay, I hope we are done with the head and neck anatomy till now. ठीक है. हमने हेड के स्कल के बोन्स के बारे में बात कर लिया, हमने स्कैल्प के बारे में बात कर लिया, हमने नेक के बारे में बात कर लिया, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल्स के बारे में बात कर लिया, हर एक के कंटेंट, बॉर्डर्स एंड ठीक है, कंटेंट, मसल्स एंड ऑल दोस थिंग्स एंड सम ऑफ द ग्लैंड्स एज वेल. ठीक है. कोई डाउट यहाँ तक? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है. ठीक है. ओके, लेट्स वाइंड अप. अच्छा, किसी को अगर वो जो कल वाला टेस्ट था, इन केस अगर किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो जस्ट लेट मी नो. यू कैन जस्ट सेंड मी द इमेज, द पिक्चर ऑफ फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आई विल जस्ट हैव अ लुक एट इट. ठीक है. आई थिंक कुछ क्वेश्चन में डाउट था, आपने मुझे व्हाट्सएप भी करके बताया था, तो बट आई थिंक उसमें कुछ इशू हो रहा है. आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है, वो अभी ऐसे कुछ हुआ नहीं, बट आई डोंट नो इस बार क्यों हो रहा है ऐसा. तो आई जस्ट हैव अ लुक एट दिस कि ये क्या सीन है, एंड आई ट्राई टू रेक्टिफाई इट. ठीक है. बाकी अगर कोई डाउट है किसी का किसी क्वेश्चन में, तो जस्ट लेट मी नो एंड आई विल सॉल्व दैट डाउट. ठीक है. ओके, देन लेट्स वाइंड अप. थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir.